Day 15, magical relationships. Is it magical relationship? Repeat, ma'am. Magically heal your relationship. Yeah. Day 15, magically See, हम लोग जब भी कुछ पढ़ते हैं ना, हमें पता है आगे क्या है. Similarly, when we are listening to people, before a person starts talking, हमें पता है वो क्या बोलने वाला. अरे कुछ सुन तो लो. क्या मालूम वो कुछ और बोलने वाला हो. So similarly, when we read, many times it happens with me also. मैं आधा सेंटेंस पढ़ती हूँ, बाकी लगता है कि हाँ मुझे पता है क्या है. But many times it's totally different. So it's magically heal your relationships. जो हमारे relationship जिनमें तकलीफ है, जिनमें अंधकार है, जिनमें problems हैं, जिनमें issues हैं, how to heal them. हाँ जी, पढ़े. If you have a difficult or broken relationship, are suffering from a broken heart, or hold any resentment or blame toward another person for anything, you can change it through gratitude. Gratitude will magically improve any difficult relationship, whether that person is a husband or wife, brother or sister, son or daughter, partner, boss, business client, work colleague, mother or father in law, parent, friend, or neighbor. Okay, pause. So मैंने अपनी relationship अपने ex boss के साथ बहुत अच्छी बनाई थी with gratitude. So I can vouch for it. That is one. Secondly, आपका कोई भी relationship हो, चाहे वो wife के साथ हो, चाहे वो brother sisters के साथ हो, चाहे वो parents के साथ हो, spouse के साथ हो, मतलब neighbors के साथ भी बहुत, मतलब मैंने neighbors के ऊपर भी gratitude को practice किया है, and I've seen the difference with, you know what, which I could see myself कि क्या क्या difference आ रहा है उनके behavior में towards me. I was just paying gratitude and they were changing. Yeah, और कितनी बार ऐसे होता है ना, हमारा कोई एक्स दिख जाता है हमें जिसने हमारा हार्ट ब्रेक किया हो, और कितना गुस्सा आता है उसको देख के, अंदर ही अंदर कुड़न होती रहती है, गुस्सा आता रहता है उसको देख के. अगर स्पेशली किसी और के साथ देख लो तो बस पूछो ही मत. So whenever you're holding a resentment, you're blaming other people, you know, those kinds of relationships are always painful. और वो हमेशा रहती है हमारी जिंदगी में, क्योंकि हम उनको हील ही नहीं करते हैं, क्योंकि हमें आता ही नहीं है हील करना. अभी कुछ कुछ लोगों ने आजकल फॉरगिवनेस के ऊपर बहुत हो रहा है, वो ओपनो भी हो रहा है, बट हाउ मेनी पीपल नो अबाउट इट. एंड देन for forgiveness you have to sit in meditation, get in all that mood and all that. How many people do that? Even hopno who all do it. And but gratitude is so simple. You can just do it for anybody and anywhere. You don't need extra time. You don't need extra tools, nothing. It is so simple that you can magically heal any relationship. Any relationship. So just read up. Please read. When we are faced with a difficult relationship or a challenging situation in relationship, in almost all cases, we are not in the least but grateful for the other person. Instead, we are busy blaming the other person for the problems we have with them. And that means we don't have a shred of gratitude. Blame is never going to make a relationship better, and it's never going to make your life better. In fact, the more you blame, the worse that relationship gets, and the worse your life gets. We all know that जहाँ पे भी हम ब्लेम कर रहे होते हैं दूसरे बंदे को, क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, वहां पे रिलेशनशिप तो स्कार्ड ही होता है ना. वहां तो कुछ ना कुछ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होता ही होता है. आप भी दुखी, वो भी दुखी, जिंदगी दुखी. हाँ जी. Whether it is a current relationship or a past relationship, if you harbor bad feelings toward another person, practicing gratitude will eliminate those feelings. Why would you want to remove your bad feelings about another person? Holding on to anger is like grasping. Oh, अगर आपका अभी का कोई रिलेशनशिप जो अच्छे से नहीं काम कर रहा है, या पास्ट का भी कोई रिलेशनशिप हो सकता है, लाइक आई वाज टॉकिंग अबाउट योर एक्स,
आपके एक्स ने आपके साथ कुछ बुरा किया और आपको डंप करके चला गया, एंड चला गया या चली गई, एंड देन यू आर ऑलवेज फीलिंग हार्बरिंग दैट बैड फीलिंग अगेंस्ट दैट पर्सन, इसने मेरे साथ ऐसा किया, भगवान देखेगा इसको, इसके साथ तो ऐसा ही होगा, वी ऑलवेज हैव दोज काइंड्स ऑफ फीलिंग्स टुवर्ड्स दैट पर्सन। अगर हमें अपनी रिलेशनशिप को हील करना है तो हमें ग्रैटिट्यूड देना है। अब ग्रैटिट्यूड देना क्यों है, हमें वो हील ही क्यों करना है? उसने हमारे साथ बुरा किया है तो हम उसको माफ कैसे कर दें, हम उसको भूल कैसे जाए? और ग्रैटिट्यूड, जस्ट फॉरगेट इट, दिस इज अ नॉर्मल पर्सन्स बिहेवियर। I was also like that at times. There was a time like that. I said, how can I forgive this person? And how can I think of gratitude for this person? But when I started practicing it, I am at peace. I have no resentment. I have no anger. I have no bad feelings against those relationships. And why we have to do it? Let's read it. Holding on to anger is like grasping a hot coal with the intent of throwing it at someone else. You are the one who gets burned. Gautama Buddha, founder of Buddhism. Bad feeling. ये ना बहुत क्लियरली लिखा है, और ये अगर हमें समझ आ जाए ना तो हमारी जिंदगी सुधर जाए। वो कह रहा है कि जब आप किसी के ऊपर गुस्सा करते हो या किसी के लिए बैड फीलिंग्स रखते हो या उसके बारे में कुछ ऐसा सोचते हो और उसको नहीं भूल पाते हो, या you just holding on to that, you're holding to resentment, you're holding to anger, you're holding to all that, क्या कर रहे हो आप? आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने कोयले को जलते हुए देखा है, और कहीं नहीं तो हलवाई की दुकान पे तो देखा ही होगा। आजकल तो खैर हलवाई की दुकान पे भी गैसेस हैं। देखा है, यस, जहाँ भी तंदूर लगता है वहाँ कोयला होता ही है। हाँ, सो आई रिमेम्बर लाइक माय मदर, लाइक व्हेन वी डिडंट हैव, लाइक तब तो होते ही नहीं थे, एक स्टोव ही होता था पहले एक सिंपल स्टोव होता था, वो पंप करके उसको जलाते थे, फिर उसके बाद वो बत्ती वाला स्टोव आ गया जिसमें थ्रेड्स होते थे ऊपर बत्ती, उसमें आग लगा के, जो भी है, आई डोंट नो एग्जैक्टली। सो उस टाइम पे अंगीठी जलाते थे, तंदूर का छोटा फॉर्म, तंदूर इज टू बिग राइट, उसका एक छोटा फॉर्म होता जो हर घर में होती थी, या तो चूल्हा होता था, बंगाली में उसको बोलते हैं उनून। हाँ, तो जिनके घर में, जैसे गांवों में तो चूल्हा होता था, शहरों में लोगों के पास में अंगीठियां होती थी, और उस अंगीठी को जलाते थे और उसमें कोयला जलता था। अब जब वो कोयला जलता है तो आपने देखा होगा, पहले तो बहुत धुआं छोड़ता है और उसके बाद वो रेड हो जाता है आग से। हैव यू सीन इट? आग से तपा हुआ कोयला देखा है? वो एकदम रेड हो जाता है। रेड होता है। यस, हाँ, सोचो ऐसा जलता हुआ रेड, जितना आप जल रहे हो ना अंदर से उस चीज को लेके, आप उस कोयले की तरह रेड हो चुके हो, जल रहे हो अच्छे से, और उसको अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, उस कोयले को अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। अब मुझे बताओ, और आप उस इंसान के ऊपर उस कोयले को फेंकना चाहते हो कि उसका नुकसान हो। मेरा जो अंदर का गुबार है ना, मैं किस पे निकालूं? मुझे उसी पे निकालना है, राइट? तो आप वो कोयले को हाथ में पकड़े हुए हो, एंड यू वांट टू थ्रो इट ऑन दैट पर्सन, बट टेल मी, जब तक आप थ्रो करोगे उससे पहले हाथ किसका जल रहा है? आपका जल रहा है ना। सो दिस इज व्हाट यू आर डूइंग टू योरसेल्फ, इस इंटेंशन से कि हम दूसरे के ऊपर आग वाला वो कोयला फेंकेंगे, आप अपने हाथ को जला रहे हो, एंड इन मोस्ट प्रोबेबिलिटी आप उसको उसके ऊपर फेंक ही नहीं पाओगे, आप वैसे ही उसको गिरा दोगे। और ये होता भी है ना, हमारा गुस्सा कहीं का कहीं पे निकलता है। ऑफिस में कुछ हुआ, जलता हुआ कोयला लेके आए हो, बीवी पे निकल गया, बच्चों पे निकल गया, होता है नहीं होता है? यस और नो? यस मैम। हाँ, ये होता है हम सबके साथ ना, क्योंकि वो कोयला इतना जल रहा है, हमारा हाथ जल रहा है, तो हम उसको फेंकना चाह रहे हैं। तो जिसके लिए था उस पर तो फेंका नहीं, पहले तो अपने आप को जलाया, फिर किसी और पे गिरा दिया उसको। सो दिस इज व्हाट वी डू।
तो गौतम बुद्धा ने कितने साल पहले ये बात बोली कि जब आप गुस्से में हो, किसी के लिए कुछ अपने मन में रखे हुए हो, तो आप अपने आप को जला रहे हो। तो ग्रैटिट्यूड से क्या होगा, उसका तो जो होगा होगा, वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट देम राइट नाउ। आपको शांति मिलेगी, यू विल बी एट पीस, यू विल नॉट बी बर्निंग। और आजकल पूरी दुनिया किसके पीछे भाग रही है? पीस। मेडिटेशन क्यों हो रहे हैं? वी वांट पीस। लोग रिट्रीट्स पे क्यों जा रहे हैं? बिकॉज वी वांट पीस। और इतना सिंपल सा तरीका है उसके लिए, जस्ट पे ग्रेटिट्यूड टू पीपल। हाँ जी, पढ़े। Bad feelings about another person burn your life, but gratitude will eliminate them. For example, if you have an ex partner who is connected to you through your children and the relationship isn't good, look at your children's faces and realize that they wouldn't be alive if it wasn't for your ex partner. Your children's lives are one of the most precious gifts you have. Look at your children and give thanks to your ex partner for their lives every single day, as well as bringing peace and harmony to the relationship. Through your example, you will be teaching your children the greatest tool for their life, gratitude. You know, many time it happens when there is a divorce and पार्टनर्स अलग हो जाते हैं, बच्चा एक के पास होता है, मोस्टली मदर के पास ही होता है। तो इतना ज्यादा उनको पॉइजन कर देते हैं अबाउट देयर पेरेंट्स, बट देयर आर पीपल हु एक्चुअली टेल देम कि हाउ ग्रेट दैट father is, how great their mother is. It's just that we could not gel together. But as a human being, as a person, he or she is too good. Right? तो जब आप ये करते हो तो ग्रेटिट्यूड में हो ना, बिकॉज आपकी जिंदगी में इन बच्चों के लिए जिम्मेवार कौन है? आपका एक पार्टनर, जिसकी वजह से वो आपकी जिंदगी में आए बच्चे। और ये बच्चे हर माँ बाप को बहुत प्यारे होते हैं। अब आपको इतनी प्रेशियस गिफ्ट जब आपके पार्टनर ने दी है, be grateful for that, right? I have seen two such people. One, of course, I know personally. She's divorced her first husband, and children were raised by the second husband. But first husband is very good friends of theirs. Every function, every time there is something, he's there with them. So it shows that person is so full of gratitude for that person कि उसके मन में उसके लिए कुछ है ही नहीं ऐसा कि इसके साथ मैं निभा नहीं पाई या इसने मेरे साथ ऐसा किया। या so आप ऐसा जब करते हैं तो आप बच्चों को भी वही सिखाते हैं। Even the kids are so connected to both the parents, both the fathers, right? Because you are teaching them by leading by example. 70% बच्चा अपने एनवायरमेंट से सीखता है, घर से सीखता है। 30% दुनिया से लेके आता है वो, 70% वो घर से ही सीखता है। तो set a good example for them. Yeah. One second. Or if you're suffering. Or if you are suffering from a broken heart or grief due to a relationship having ended, you can use gratitude's magical power to transform your pain. Gratitude magically transforms emotional pain into healing and happiness faster than anything else. And the story of my parents is a perfect example of that. My mother and father fell in love with each other virtually at first sight. From the moment they met, they were truly grateful to be with each other, and they had the most beautiful marriage I have ever seen. When my father died, my mother understandably suffered from enormous grief. After months of suffering, she began to use gratitude's magical power, and despite her immense grief and pain, she looked for things to be grateful for.
She began with the past and she recalled all the wonderful times of happiness she had received through the decades with my father. Then she took the next big step and she looked for things to be grateful for in the future. One by one, she found them. She found or remembered things she had always wanted to do but didn't have time to do when my father was alive. And with this courageous step of gratitude, opportunities to fulfill her dreams magically poured in, and her life became rich with happiness again. The magical power of gratitude gave my mother a new life. Okay, so she's talking about her parents. That after her father passed away, her mother was obviously she was broken and shaken, but she started with the practice of gratitude. पहले उन्होंने पास्ट में जो कुछ उनके हस्बैंड ने उनके लिए किया उसके लिए उनको ग्रेटिट्यूड दिया. सो पहले पुराने जो उधार रहते थे वो पूरे किए. जहां जहां हमने ग्रेटिट्यूड नहीं दिया हुआ है वो पूरा किया उन्होंने. एंड देन शी स्टार्टेड पेइंग ग्रेटिट्यूड फॉर द फ्यूचर. शी स्टार्टेड विजुअलाइजिंग हर ड्रीम. जो उसके ड्रीम्स थे जो उन्होंने नहीं पूरे कर पाए थे व्हेन ही वाज अलाइव. मेनी अ टाइम्स होता है कि आप फैमिली में अपने हस्बैंड की वजह से नहीं कहीं जा पाते हो, या you want to go on a solo trips and you want to explore, but husband is not very keen on doing that, or maybe you just want to stay in some remote area, just want to be with your own self. But with your husband being there, there's responsibilities there, duties to be performed, so you're not able to do it. So whatever dreams she had, she started visualizing them and being grateful for them, as you did day before yesterday, or yesterday, I don't remember. Yeah, so she started doing that. And उसको करने से उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना फ्यूचर जो है वो वैसा फ्यूचर क्रिएट किया जैसा वो जीना चाहती थी. And her life changed magically, इमोशनली एंड अदरवाइज सेटिस्फाइड लाइफ होती है ना जैसे, वैसी लाइफ जीनी है ना, तो सिर्फ ग्रेटिट्यूड करना शुरू करो. वट एवर यू हैव इन दैट रिलेशनशिप, कुछ तो अच्छा किया ही होगा ना उन्होंने. So let's see what is the practice today. मैम थोड़ा सा ऊपर, फॉर टुडेज मैजिकल टेक अ हॉट, और थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा. Yes. For today's magical practice, you are going to look for a hot coal that is burning in your life and literally turn it into gold through gratitude. Choose one difficult, problematic, or broken relationship that you want to improve. It doesn't matter whether the person is currently in your life or if it is a past relationship and the person is no longer in your life. Sit down and make a written list of 10 things you are grateful for about the person you have chosen. Think back through the history of the relationship and list the great things about the person or the great things you received from the relationship. The easiest way to do this is to think back to the way things were before the relationship deteriorated or ended. If the relationship was never good, then think hard about any good qualities in the person because they are there. Okay, अब जो भी एक रिलेशनशिप है जो आपकी इस टाइम पे अच्छी नहीं है, which is like a burning coal, जो जलते हुए कोयले की तरह है आपके लिए, आपको परेशान कर रही है, एक ऐसा रिश्ता जिसके ऊपर आपने आज काम करना है. हो सकता है आपको लगता है उसमें कुछ भी अच्छा ही नहीं, जब देखो मुझसे लड़ता रहता है, जब देखो मेरे साथ मुझे उल्टा जवाब देता है, जब देखो मेरे साथ आर्ग्यूमेंट करता है, व्हाटएवर इट इज, जो भी उस रिलेशनशिप में आपको लगता है, जस्ट थिंक कौन से पॉइंट से वो रिलेशनशिप डिटीरिएट होना शुरू हुआ. कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां से वो जिंदगी ने वो टर्न लिया कि वो रिश्ता पहले बहुत प्यारा था और उसके बाद उसमें झगड़े शुरू हो गए. तो जिस पॉइंट से वो शुरू हुआ उससे पहले क्या था? Maybe that person was very loving, maybe that person was very caring,
maybe that person was very devoted. You never know क्या था उस relationship में. तो उस point से पहले जब आपका रिश्ता शुरू हुआ, तब से वो कितना अच्छा था, आपने वो सब याद करके लिखना है. हो सकता है कोई रिश्ता शुरू से खराब हो, कभी अच्छा था ही नहीं, ऐसा भी होता है कई बार. कोई बड़ी बात नहीं है, सबकी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा एक रिश्ता कहीं ना कहीं होता है जो लगता है कि जैसे कांटे कहते हैं ना, वो कंकर की तरह आंखों में चुभता है. कोई भी एक ऐसा रिश्ता जो शुरू से भी अगर काम नहीं कर रहा है, आपने सिर्फ एक रिश्ता लेना है आज. आपको याद है पिछली बार हमने जब रिलेशनशिप पे काम किया था, वी वर्कड ऑन 3 पीपल जो आपके क्लोज लोग हैं, बहुत क्लोज लोग हैं, है ना. उस रिश्ते को हमने बेटर करने के लिए 5-5 चीजें लिखी थी उनके बारे में. तो आज आपने वो रिश्ता लेना है जो काम नहीं कर रहा, जिसमें आपको प्रॉब्लम्स हैं, जो आपको बहुत अंदर से तकलीफ पहुंचाता है, दुख पहुंचाता है कि ये रिश्ता ऐसा क्यों है, राइट. उस रिश्ते को लेके आपने उस इंसान के बारे में 10 ऐसी चीजें लिखनी है जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो. नाउ ही और शी, इफ दैट पर्सन never had any good qualities according to you, because सबके अंदर गोल्ड है, हमको डिग करना नहीं आता है, राइट. अब जब आपको नीचे जाके कुछ ढूंढना है तो ऊपर का तो कीचड़ तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा ना भाई. आप जब डिग कर रहे हो किसी चीज को, तो ऊपर मिट्टी कंकड़ जो भी आएगा वो पहले निकालना तो पड़ेगा ही ना. तो सिमिलरली आपने वो गोल्ड तक पहुंचना है, तो आपने क्या करना है, आपने उनके बारे में वो 10 चीजें याद करनी है जो अच्छी हैं उनमें. नाउ इफ दैट person doesn't have any good quality according to you, so the writer is telling you how to look for them. This magical practice is not about who is right or wrong. No matter what you feel someone has done to you, no matter what someone said or didn't do, you can magically heal the relationship. And you don't need the other person in order to heal it. Okay, अभी वो कह रहे हैं कि हो सकता है आपको लगे मैं सही हूं, वो तो हमेशा से गलत ही था. अभी हमने सही और गलत पे बात नहीं कर रहे हैं. See, because जिंदगी में ना कभी भी कोई सही या गलत नहीं होता है, एक नजरिया होता है देखने का चीज को. इट्स जस्ट अ पॉइंट ऑफ व्यू. अब अगर मैं ये ग्लास बोलूं, ग्लास नहीं बोल सकती, ओके. जैसे ये फोन है, ओके, कैन यू सी माय फोन? Yes, yes. ओके. अब मेरे फोन में मेरे सामने जो उसका स्क्रीन है वो ब्लैक है, ठीक है. आपको कौन सा कलर दिख रहा है? पीछे का कलर white. क्या है? Silver, white, silvery white. Yeah, silvery white. Now I am saying no, it is black. Why don't you understand? It is black. And you say no, it is silver. It's just a way of looking at it. क्योंकि मुझे ब्लैक ही दिख रहा है. And I'm not giving you this option कि हाँ हो सकता है पीछे सिल्वर हो. मैं तो टिकी हूँ, अड़ी हूँ उस पे कि ब्लैक ही है. But if I see it from the other side, it is gray. My point of view is it is black. Your point of view is gray. But if I look from your point of view, I can also see gray, na? But hota kya hai? We get stuck with our own point of view. And we consider that to be the only point of view and the right point of view. And that is why there are disconnects in the relationships. तो वो कह रहे हैं इस वाली प्रैक्टिस में हम ये कुछ नहीं कहने वाले कि कौन सही है कौन गलत है. We are not getting into that conversation and that debate. We are not getting into that at all. But यहाँ पे हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि अगर उस रिश्ते को हमें सुधारना है तो हमने करना क्या है, ठीक है? There is gold in every relationship, even the difficult ones. And to bring riches to all your relationships and your life, you have to find the gold. As you dig and discover a nugget of gold, write it down. Address the person by the name and express your sentence in gratitude. Name, I am grateful for what? Paul, I am grateful for our time together. While our marriage did end, I learned a lot.
I'm so much wiser today, and I use what I learned from our marriage in many of my relationships today. Paul, Okay. I'm good. अभी when she was talking about कि अगर आपका किसी का सेपरेशन हो गया, डिवोर्स हो गया है और आप उसके लिए भी कैसे ग्रेटफुल हो सकते हो, तो उसके लिए शी इज गिविंग यू सम एग्जांपल्स कि क्या लिख सकते हैं. Though the relationship ended, so this is what she's writing. So she's writing 10 gratitudes for Paul, who happens to be her husband, ex-husband. Anji. Paul, I'm grateful for everything you did to try and make our marriage work because 10 years of marriage means you did try. Paul, I'm grateful to you for our children. The joy I receive from them every day could not be without you. Paul, I'm grateful to you for the hard work and long hours you put in to support our family while I was at home taking care of our children. It was a big responsibility to have all of us dependent on you. So thank you, Paul. Pause. अब ये वाली बात पे ना अक्सर झगड़े होते हैं. बच्चों को पालने पोसने का सारी जिम्मेवारी औरत की. मैं ही करती हूँ, मैं ही उनका होमवर्क कराती हूँ, मैं ही उनको स्कूल भेजती हूँ, मैं ही उनको खाना बनाती हूँ. यू नो, मैंने ही तो करा, मैंने ही उनको पाल पोस के बड़ा किया. व्हाट डिड यू डू? अक्सर लोग ये बोलते हैं ऐसे जब झगड़े होते हैं. बट शी इज सेइंग कि आपने कितनी मेहनत करी है कि आप हमारे हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा पाओ. व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग एट थिंग्स लाइक दैट, ग्रेटिट्यूड तो आएगा ही ना. या Paul, I'm grateful to you for the precious moments I had with our children as they grew up. I got to see our children talk and walk for the first time, and I know you didn't have that opportunity. Paul, I'm grateful for your support when I went through a difficult time of grief and loss. Paul, I'm grateful to you for the times when I was sick and you did your best to take care of me and the children. Paul, I'm grateful. Ma'am, number 8. वन सेकेंड. यार ये ना माउस बहुत परेशान करता है और मैं इसको फिर भी यूज करना बंद नहीं करती. या Great gratitude. यस Grateful to the mouse. Okay. यस. Paul, I'm grateful for the great times we had, and we did have many. Paul, I'm grateful that you want to continue to be a father to our children. Paul, I'm grateful for your support and the time you want to give to our children. I know they mean as much to you as they do to me. ओके. सो डिड यू सी उसने कैसे ढूंढ ढूंढ के 10 चीजें ऐसी ढूंढी हैं उस रिश्ते में जिसके लिए वो ग्रेटफुल हो सकती है. ऐसे हम भी जो भी रिश्ता हमारा अच्छा नहीं चल रहा है उस रिश्ते के लिए कहीं से भी ढूंढ ढूंढ के 10 चीजें निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं. ओके. सो लेट्स रीड what other cue the book is giving us. By the time you have finished your gratitude list of 10 things, you should feel much better about the person and the relationship. The ultimate point you want to reach is where you don't have any bad feelings toward the person anymore because it is your life that is harmed by those feelings. Every relationship is different, and if need be, you may choose to repeat this magical practice over several days until you reach the point where you don't have any bad feelings toward the person anymore. ओके. सो बहुत बार ऐसे होता है कि एक दिन करने से हमको जरा सा भी कुछ महसूस नहीं होता. सो जहां पर बहुत ज्यादा भरा हुआ है ना, बहुत ज्यादा कुछ भरा हुआ है उस रिलेशनशिप में, नेगेटिविटी इतनी ज्यादा भरी हुई है, तो वो एक बार 10 बार लिखने से काम नहीं होता है. बिकॉज टिल द टाइम यू स्टॉप फीलिंग बैड अबाउट दैट पर्सन, till the time you don't have any hard feelings about that person,
तब तक आपका ये काम पूरा नहीं हुआ है, तब तक ये काम नहीं कर रहा है। तो आपको अपनी ग्रैटिट्यूड जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड करना पड़ेगा। जैसे कुछ रिलेशनशिप में नहीं चल रहा होता, कुछ बहुत कोशिश के बाद भी नहीं चल रहा होता है, तो हम एक दिन लिखते हैं, 2 दिन लिखते हैं कि मैं तो लिखा था, कुछ भी नहीं हुआ, रिलेशनशिप सुधरी ही नहीं। अरे कॉन्सेंट्रेटेड रिलेशनशिप में कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड करो उस रिलेशनशिप के लिए। Do it every single day. Every day, think of 10 things for that person. At least do it for 7 days. 7 days maybe nahi hota, to keep continuing it till the time you get that feeling that you don't have anything against that person. और ये कर किसके लिए रहे आप? अपने लिए। उस बंदे के लिए नहीं कर रहे हो, आप अपनी शांति के लिए कर रहे हो, आप अपनी खुशी के लिए कर रहे हो, आप अपने उस जलते हुए कोयले को फेंकने के लिए कर रहे हो, राइट? हाँ जी पनी। If you are using gratitude's magical power to improve a current relationship, you will see the relationship begin to change miraculously before your eyes. It only takes one person to magically change a relationship through gratitude, but it is the person who uses gratitude who receives the benefits in their whole life. ओके, सो जब हम लैंडमार्क में थे ना, हमें ये चीज सिखाई गई थी दैट इन एवरी रिलेशनशिप यू आर 100% रिस्पॉन्सिबल। और हमारे में क्या होता है कि मैंने ये किया, तूने क्या किया मेरे लिए। बट इफ यू आर स्टैंडिंग 100% इन योर रिलेशनशिप, यू आर ग्राउंडेड इन दैट रिलेशनशिप 100%। आपने जो बोला है, जो कर रहे हो, आप 100% दे रहे हो उसमें। अक्सर क्या होता है, आप 100% दे रहे हो, सामने से the person gave you 80%. Now yours is coming down to 70%. आपका 70% पे आ जाता है। अब आपका 70 पे आ गया तो उसका भी नीचे आ जाता है। करते 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 इसीलिए रिश्ते टूट जाते हैं, बिकॉज वी आर नॉट स्टैंडिंग ऑन आवर 100%। हमारा भी वो स्पाइरल करके नीचे जाना शुरू हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन द अदर पर्सन्स बिहेवियर। बट इफ वी आर बीइंग 100% कमिटेड इन दैट रिलेशनशिप, that relationship has to work. Similarly, if you really want this relationship to work and you want to do this gratitude practice, you have to give your 100% in this. If it is not happening in one day, do it for 7 days. If it is not happening in 7 days, continuously keep doing till the time you get to that feeling, that point where you start feeling, I mean, there's no negativity towards that person. प्रैक्टिस लगती है, आसान नहीं है। हम चाहते हैं हमें इंस्टेंट को उसका वो इलाज मिल जाए। अरे आपने 10 साल अपने रिश्ते को बिगाड़ने में लगाए हैं और चाहते हो एक दिन में 10 ग्रैटिट्यूड लिख के हो जाए पूरा। इज इट पॉसिबल? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। जितना आपने टाइम उसको बिगाड़ने में लगाया, उससे डबल टाइम तो लगेगा ना। वैसे तो 10 टाइम्स लगेगा, 10 टाइम्स एफर्ट लगेगा आपको, है ना? आपने पढ़ा है ना इसमें, इफ यू ब्लेम कंप्लेन अबाउट समबडी वंस, योर रिलेशनशिप गोज 10 स्टेप्स डाउन। अब वो 10 स्टेप्स डाउन में आपने पता नहीं कितनी कंप्लेन्स की, दिन में ही कितनी बार करते हो, तो वो गड्ढे में तो गिरा ही हुआ ना रिश्ता। उसको ऊपर लाने के लिए आप सिर्फ 10 सीढ़ियां चढ़ते हो, चढ़वाते हो या चढ़ते हो, तो पहुंच जाओगे क्या ऊपर? नहीं। You have to keep doing it, keep doing it, keep doing it, so that you are able to reach that level जहां से वो रिलेशनशिप कभी शुरू हुआ था। So there is lot of effort required, but it all depends how committed are you in that relationship. आप उस रिलेशनशिप को कितना सक्सेसफुल बनाना चाहते हो। That is the reason it is, said that आपको concentrated gratitude करना है जब तक उस पॉइंट तक नहीं पहुंच जाते। हाँ जी। If you chose a past relationship where you are not in contact with the person anymore, you will feel a peace and happiness fill you. And at the same time, you will see other current relationships in your life magically improve. Okay, so she was talking about कि अगर आप साथ में रह रहे हो, आपके आसपास में है, वो प्रेजेंट रिलेशनशिप है, आपके हस्बैंड का है, मदर इन लॉ का है,
बच्चे के साथ है, बॉस के साथ है, नेबर्स के साथ है, वो तो इमीडिएट है ना, आसपास है हमारे. तो मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस फॉर दैट रिलेशनशिप, आपको उनके बिहेवियर में अपने आप चेंज दिखना शुरू हो जाएगा. हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्सपीरियंस्ड इट? आई हैव. किसी ने एक्सपीरियंस किया? वरुण, अंतरा? एक्चुअली मैंने इसको तो एक्सपीरियंस कभी नहीं किया. ओके, आपने प्रैक्टिस किया इसको? प्रैक्टिस किया, यस. ओके, वो एक ही बार किया? नहीं, मल्टीपल डेज तक किया, बट रिजल्ट मिला नहीं तो फिर छोड़ दिया. ओके, सो अगर रिजल्ट नहीं मिला, दैट मीन्स आपने फीलिंग्स के साथ नहीं किया उसको, यू जस्ट रोट इट. सो और मे बी दैट रिलेशनशिप बहुत ज्यादा नीचे गिरी हुई है, उसको लाने के लिए आपको और दिन तक उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, राइट? ओके. ओके. Because I am sharing about my boss's relationship. I used to see her every day, and she herself was telling her friends that I was a very nasty boss. So imagine अगर वो खुद अपने मुंह से बोल रही है तो वो कितनी nasty होगी. But I just started paying gratitude to her every single day. मैं ऑफिस पहुंचती थी, सबसे पहले उसके लिए gratitude लिखती थी. And there was like, today we are very good friends. Or if she invites me to her house, she comes to my house. It all happened because of gratitude. So ये depend करता है आपने कितनी feelings है और कितने, because बात तो सारी feelings की है ना, और Right. कितनी गहराई तक वो आप डैमेज कर चुके हो उसको. Yeah, it depends on that. Right. And अगर वो past का भी है तो आपको पता तो चलेगा नहीं कि past वाला जो relationship खत्म हो चुका, फिर उसमें कुछ change आ रहा है या नहीं आ रहा. But क्या difference महसूस होगा? You will be at peace. आपको वो रिश्ते के बारे में सोच के तकलीफ नहीं होगी. You will be at peace. हाँ जी. In the future, if a relationship becomes challenging, remember to use this magical practice immediately. You will stop the difficulties before they get any bigger, and instead you will increase the magic in the relationship. Okay, so what she's giving you is a tip कि आपने अगर इस वाली टेक्निक को प्रैक्टिस कर लिया रिलेशनशिप के लिए, पास्ट के लिए भी कर लिया, प्रेजेंट के लिए भी कर लिया, अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ होता है किसी रिश्ते में, तो आपको पता है आपको क्या करना है. सिंपल 10 ग्रेटिट्यूड्स लिखने हैं उस इंसान के बारे में, है ना? तो यू नो व्हाट टू डू. सो फॉर योर फ्यूचर इज आल्सो, फ्यूचर रिलेशनशिप्स आर आल्सो सिक्योर्ड. हाँ जी. Magic practice number 15. Magically heal your relationships. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say, thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. Okay. Choose. So this you know how to do it. अभी तो 14-15 दिन हो गए. So you know how to do it. So I don't have to talk about it. Anji. Choose one difficult, problematic, or broken relationship that you want to improve. Sit down and make a written list of 10 things you are grateful for about the person you have chosen. Write it down in the following way. Name, I'm grateful for what? Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Okay, तो आज आपको क्या करना है, जो भी एक रिश्ता जो अच्छा नहीं चल रहा है, जो प्रॉब्लम दे रहा है, जिसमें आपको बहुत तकलीफ है, आपने उस रिश्ते को लेना है और एक जगह बैठ के उस रिश्ते में उस इंसान के बारे में 10 ऐसी चीजें लिखनी है जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो. और कैसे शुरू करना है? पहले उस इंसान का नाम, फिर थैंक यू, पहले उस इंसान का नाम, फिर आई एम ग्रेटफुल, किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो वो लिखना है, राइट? So this is your assignment. Of course, you have to do your magic rock practice every day. I don't have to tell you that, and I hope you are doing it. So this is today's assignment. This is today's magical practice. So anything anybody wants to say or ask before we conclude the session? आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमारी जिंदगी में हर एक रिश्ता बहुत मायने रखता है और हमारे रिश्ते अच्छे ना चल रहे हो तो हमारी जिंदगी की बैंड बजी रहती है. ये हम सब जानते हैं. बहुत पैसा है,
बहुत सक्सेस है, सब कुछ है, अगर रिश्ते में कड़वाहट है तो जिंदगी जहर है। इतना कुछ होने के बावजूद भी वो सुख, शांति, समृद्धि का एहसास नहीं होने देती है। Yeah, so this is a most important area of our life which impacts each and every area of our life, जो हमारी जिंदगी के बाकी एरियाज को बहुत इम्पैक्ट करता है। तो ये बहुत अहम चैप्टर है और इसको बहुत ध्यान से समझ के, नहीं समझ आया एक बार में तो दोबारा पढ़ लेना बिफोर यू डू इट। इसको अच्छे से समझ के डू दिस असाइनमेंट टुडे। हाँ जी, एनीबॉडी हैज टू से एनीथिंग और एवरीथिंग इज फाइन? अंतरा, मैम एक चीज सिर्फ पूछना है, वहां पर लिखा हुआ है ना वो सेकंड लास्ट पैराग्राफ में कि इवन इफ यू आर नॉट इन टच विद दैट पर्सन स्टिल वी कैन बी ग्रैटिट्यूड इन सो यहाँ पर तो हम लोग हील करने वाले हैं रिलेशनशिप को, आज का जो प्रैक्टिस है। बट इवन इफ आई एम नॉट इन टच विद द पर्सन, कैन आई सिलेक्ट one from them? Like suppose I want to give gratitude but I am not in touch with the person but I want to write, I can. so even if person is not in this world you can do it, because वो कहीं ना कहीं आपको रिस्ट्रिक्ट करा हुआ है, आपके लिए वो जलता हुआ कोयला है। ये करना अपने लिए है, उनके लिए नहीं करना है। यू हैव टू डू इट फॉर योर ओन सेल्फ। तो अगर वो जलता हुआ कोयला अगर पिछला कुछ है बट अभी तक पकड़ा हुआ है आपने, तो उसको तो फेंकना ही है ना, तभी तो शांति मिलेगी, तभी तो वो जलन कम होगी, राइट? प्रीति आपको कुछ पूछना है? वरुण आपको कुछ पूछना है? मैम मैं ये पूछ रही थी कि अगर मतलब रिलेशनशिप ना हो, मतलब जिसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक ठाक हो, देखो हमारी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा रिश्ता होता है जो हमें हल्का हल्का चुभन देता रहता है। तो आपने ऐसा एक रिश्ता ढूंढना है। अभी का हो सकता है, कुछ पिछला हो सकता है किसी फ्रेंड के साथ कुछ झगड़ा हुआ हो कभी, जो आज भी आपको तंग करता है कि मैंने उसके लिए इतना कुछ किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, समथिंग लाइक दैट। या आपके नॉर्मल रिलेशनशिप को और अच्छा बनाने के लिए नहीं ले सकते, बस मतलब बहुत मुश्किल उसको ही लेना है। हाँ, क्योंकि ये प्रैक्टिस इसलिए है कि जहां पर भी फ्यूचर में भी अगर आपकी जिंदगी में ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए जिसमें कोई रिश्ता आपको तकलीफ देना शुरू कर दे, तो आपको करना क्या है, इसलिए प्रैक्टिस करनी है। तो जो भी हो, आपके पास्ट का हो सकता है, आपके प्रेजेंट में हो सकता है, जो भी रिश्ता आपको चुभन दे रहा है, जो भी आपको तकलीफ दे रहा है, आपने वो लेना है। और ऐसा हो नहीं सकता कि किसी की जिंदगी में ऐसा कोई इंसान ना हो। बहुत है, एक नहीं बहुत है, बट एक जो सबसे ज्यादा परेशान करता है, आपने उसको लेना है। ओके मैम, राइट? हाँ वरुण, you were saying something? No. Okay, fine. So let's do the prayer. So fold your hands, close your eyes, and say thank you to whosoever you want to say thank you. Okay, so have a wonderful day and we will meet tomorrow. Let me see if I can change the time, because I also would like to change time that more and more people can join. Group में डाल के देखती हूँ, in case people respond to it, then we will see. Okay, fine. Okay then, bye bye. Bye bye ma'am.